PCM students, this topic is only there for you. And over here, we are going to talk about law of radioactive disintegration. Mind you, what we did in the past was law of radioactive transformation. Transformation means when one alpha particle goes out, what happens when one beta goes out, what happens, and when one gamma ray photon goes out, what happens. So a quick recap before we continue with this. How did we talk about radioactivity? We said that natural radioactivity takes place when N by Z ratio is more than 1.5. Yes or no? If you think about sodium 1123, if you think about magnesium 1224, इसमें बेटे N by Z ratio greater than or equal to 1 है, मानता हूं, right? But it is not more than 1.5, right? यहाँ पे there are 11 protons, 12 neutrons. So 12 upon 11, no doubt is a number more than 1. But it is not more than 1.5. Right? Over here there are 12 protons, 12 neutrons. That means the ratio is exactly 1. But if I think about radium 88 to 26, if I think about uranium 92 to 38, over here there are 88 protons, there are 138 neutrons. That means there are 50 neutrons extra. Over here there are 92 protons, 238 minus 92, 146 neutrons. इसका मतलब there are 54 neutrons extra, 50 neutrons extra, 54 neutrons extra. So what happens to these extra neutrons? These extra neutrons, they break up into protons and electrons. And you know very well, because we have done this kind of questions, that mass number wise they are never balanced. ये दिखने में 1 equal to 1 plus 0 दिखता है, but this is 1.0086, this is 1.0073, and this is 0.00055. So 1.0073 plus 0.00055 is 1.0078. This total is 1.0078, but this is 1.0086. So according to Einstein's equation, there will be energy liberated. ये बेटा एक reaction हो गया. And this explains you about how protons come out. Is that clear? Proton means hydrogen nucleus. I'm not talking about hydrogen atom. The second possible reaction was 4 such hydrogen nuclei combined together to give you 1 helium nucleus, 2 positrons, and energy. This explains you how alpha particle comes out. This is explanation of alpha. This is explanation of beta. And here, Professor Henry Becquerel was being questioned. He said, how is electron possible? You are talking about nuclear reaction. Nucleus के अंदर तो electrons होता ही नहीं है. So he said that it is not the electron which is coming out from the orbit. It is the electron which is coming out because of splitting up of extra neutrons. It is because of the splitting of neutrons, and neutrons are nucleons, they are the nuclear particles. So this was the origin of beta. Now electron from here and positron from here, they annihilate. Electron from here and positron from here, they annihilate. Annihilate का मतलब होता है to kill each other, to murder each other, to assassinate each other. Right? So this is called pair annihilation theory, and this gives rise to gamma ray photon. If it is ulta, then it is called pair production theory, right? And over here, energy related to an electron is 0.511 million electron volt. We have proved this. When the error, when the mass defect is equivalent to mass of an electron, this much energy is associated with the electron. This much energy is associated with the positron also. So when an electron and a positron recombine, you get a gamma ray photon whose energy is 1.022 million electron volt. ये भी problems किए हम लोगों ने, right? ये problems कर चुके हम लोग. Assignment 3 में या तो 4 में एक question था, back to back 2 questions थे, कि when an electron and positron recombine, what is the energy? What is the minimum requirement of the energy? Answer was 1.02. उन्होंने round figure दिया था because ये half दिया था, ये half दिया था, तो ये 1 होगा. उसके बाद वाले क्वेश्चन में या तो पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी 1.78 है,
तो वो 0.78 क्या है? 0.78 is the kinetic energy with which the electrons and positons move. Because 1.78 में से 1 गया gamma ray photon बनाने में. So this was the explanation for gamma. This was the explanation for gamma. And these are called radioactive radiations. These are called radioactive radiations. That means when you deal with heavy nuclei whose N by Z ratio is more than 1.5, the nuclei they disintegrate on their own. Mind you, this is called natural radioactivity. Artificial radioactivity means, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपके थियरी नोट्स में जहाँ पे थियरी एंड होता है एकदम लास्ट में मैंने जानबूझ के कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, वेर यू विल सी फॉस्फोरस, आयोडीन, कोबाल्ट, शायद सोडियम एंड कार्बन, उसके आइसोटोप्स मेडिकल साइंस में यूज होते हैं टू क्योर डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस, thyroid related problems, skin related problems, cancer. That means if you give a controlled dose of radioactivity to a human body, it is very very beneficial also without harming our living tissues and nerves and all that. With the help of now the latest most research in medical science is gamma ray knife, right? Gamma ray knife, where it is just a torch like this, and suppose you are having brain tumor or something, then that gamma ray knife will be focused on that tumor. The doctors will exactly find out what is the thickness of that tumor. Suppose it is 2.534 millimeter, then they will set the dose of 2.534 millimeter to 2.533, little less, because your living now should not be impacted by that particular gamma ray knife, and all those cancer cells will die without harming others. Right now this is first dose. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो, अभी वो उसको मल्टीप्लाई करने का चांस नहीं है ज़्यादा. ओल्ड टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि सपोज द ट्यूमर इज 2.54 इन थिकनेस, तो मैं 2.5 तक ही जाऊंगा, मैं ज़्यादा चांस नहीं लूंगा, बिकॉज अदरवाइज ऑल्फैक्टरी ना हो और ऑडिटरी ना हो और ऑप्टिक ना हो, दे मे बी हार्म लिटल बिट. देन द पेशेंट कम्स आउट कंप्लेनिंग कि आई कांट स्मेल द थिंग्स प्रॉपर्ली, आई कांट हियर प्रॉपर्ली, आई कांट सी द थिंग्स प्रॉपर्ली, माई विजन इज ब्लर्ड. That those were all old time operations. With the help of gamma ray knife, supported by robo technology, and now AI coming up, these operations will become all the more accurate. In fact, now too, if you are detected with cancer in first or second stage, it can be completely cured also. Sometimes the problem is if you are too healthy, then also sometimes you don't come to know, because if cancer is spreading in your body, now you don't have any bad habits, you are doing workouts properly, your food habits are superb, you are not eating outside food, you are having proper sleep also, everything is perfect, right? Now what happens is, suppose some headache or something happens, you feel कि हाँ ठीक है ऐसे ही हुआ होगा, and you ignore, right? Actually speaking, something is happening. If you have suppose some kind of nausea or giddiness or something which is abnormal, एक दो बार ऐसा हुआ तो get yourself checked, because maybe sometimes this is cancer, and all of a sudden you come to know when the things have gone out of control, and it is straight away 4th stage cancer. In some patients, 1st, 2nd, 3rd stage are not detected only because you don't come to know कि मेरी body में कुछ हो रहा है. You feel हाँ ठीक है यार शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा headache, and you ignore, right? So with the help of artificial radioactivity, you can cure this. हम लोगों ने जो last time किया था, that was laws of radioactive transformations. एग्जाम में वर्ड एकदम ध्यान से पढ़ने का कि वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि वो लोग डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इफ यू टेक रेडियोएक्टिव एलिमेंट XZA and if it undergoes alpha emission, that is it gives out alpha particle. If it gives out alpha particle मतलब माइनस साइन, माइनस अल्फा का मतलब होता है अल्फा इमिशन, इसमें से अल्फा गया, राइट? जाते जाते अपने साथ हीलियम न्यूक्लियस लेके गया. Yes or no? That means the new element which you get will be having atomic number less by 2, mass number less by 4. Yes or no? Z minus 2 plus 2 is Z. A minus 4 plus 4 is A. This is first law of radioactive transformation. Second law of radioactive transformation is XZA. This is undergoing beta emission, right? And this is giving you Y Z plus 1 A, because जाते जाते अपने साथ ये इलेक्ट्रॉन लेके गया. And when a gamma ray photon is going out, XZA, right, then can I say atomic number is not changing and mass number only also not changing, only gamma ray photon goes out. So this is gamma emission.
राइट, इसको बोलते हैं बीटा माइनस। अगर बेटा बीटा प्लस इमिशन गया, लास्ट ईयर नीट में ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन पीसीएम सीईटी में पूछ सकते हैं। अगर सपोज बेटा पॉजिट्रॉन गया, तो जाते जाते अपने साथ पॉजिट्रॉन लेके गया, दैट मींस द न्यू एलिमेंट व्हिच यू गेट will have z minus 1 and this is a. When the atomic number is changing, and when the atomic number is changing, you have to change the symbol of the element. Here atomic number is not changing, तो पहले भी ये x था, अभी भी ये x है। ये हो गया बेटा आपका लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन पूछा तो ध्यान रखने का। ओके, नाउ हाउ रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड, जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का टॉपिक है। ओके, मैं जस्ट इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ। रेडियोएक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर हेनरी बैक्वेरेल and this experiment was performed in highly evacuated chamber. Over here there is a side tube and over here there is a controlling valve, right? You can just open this and you can take all the air out from this, just like vacuum pump. Over here there is a photographic film, right, which is zinc sulfide or barium platinocyanide, which is fixed with the cylinder. And over here you are taking lead block, lead PB82206, because it is a very good absorber of radiations. Secondly, lead is the last radioactive isotope. Means what? Suppose I start with uranium, then वो lead पे जाके रुक जाएगा. If I start with plutonium mass number is 241, then it comes down to 240, then it comes down to 239. उसके बाद में uranium starts. Uranium 90 to 238, then 236, then 235. Then you are starting with plutonium, then uranium, then thorium, then thoron, blah 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 blah. That is called radioactive series, and that is happening naturally. That means it is going like this: alpha, beta, beta, alpha, gamma, beta plus, right? Likewise, particles are given out, and gradually the atomic number changes. When it comes to lead, the radioactivity stops. Over here, there is a cavity made, and in this cavity, you are putting some radioactive sample. So this is that radioactive sample. Now radioactive sample is going to give you radiations in all possible directions. But these radiations are absorbed. And therefore those which are coming out from this cavity, they will strike the photographic plate. Right? So initially only one dot was observed on photographic plate, right? Then what he did, he subjected this tube to electric field, very powerful electric field. When the field was switched on, this is positive plate, this is negative plate. In place of one spot, he got 3 spots now, right? He got one more spot here and he got one more spot here. Now observe this please, they are not equidistant. Right? They are not equidistant. एक डॉट इधर है तो एक डॉट इधर है तो एक डॉट दूर है. Right? These were identified as gamma. They were going undeviated because they are uncharged. These were identified as beta. Beta are negatively charged, so they are deflecting towards positive plate, and these are known as alpha. अब ये spacing same क्यों नहीं है बेटा? Because alpha is much heavier than beta. Beta का मास है 0.00055. जबकि alpha is helium nucleus, it is 4 point something, right? So alpha is very very heavy compared to beta, right? And because its heaviness is more, that means its deviation is less. Because its heaviness is less, the deviation is more. After that, he increased the strength of the electric field. He decreased the strength of the electric field, but the rate of disintegration was not affected. Rate of disintegration का मतलब होता है how many alpha particles या तो how many beta particles या तो how many gamma ray photons come out of the radioactive nucleus per unit time. उसको बोलते हैं rate of radioactive disintegration. अगर मैं field strong कर रहा हूं, मान लो hypothetically, मान लो पहले 975 alpha particles बाहर आ रहे थे, maybe 1204 beta particles बाहर आ रहे थे, and 1000 photons बाहर आते. Let us assume, right? Even after making the field strong or weak, this number was not changing. Yes or no? That means dN by dt. This is called rate of radioactive disintegration. And this rate of radioactive disintegration was
found to be independent of, was found to be independent of, point number 1, strength of electric field and magnetic field. Strength of electric field and magnetic field. मतलब बाद में उसने क्या किया कि he used concave shaped magnet. This is north pole, this is south pole. He got the same result because beta particles will be deviated towards north pole and alpha particles will be deviated towards south pole. He increased the strength of the field, decreased the strength of the field. His answer was unaffected. Then he changed the temperature and pressure conditions also. Right? Temperature and pressure conditions also. If it was chemical reaction or if it was atomic reaction, then the rate would have been affected. But because this is nuclear phenomenon, it is not affected. Otherwise, सोचो ना, अगर आप कोई मेटल लेते हो, मान लो आपने कॉपर लिया, या तो एल्यूमिनियम लिया, या तो सोडियम लिया, और अगर आपने बहुत टेम्परेचर बढ़ाया, और उसकी वजह से अगर न्यूक्लियस ब्रेक हुआ, तो पता चला वो रेडियो एक्टिव हो गया, right? For this, you need very, very large amount of energy, very, very large. And nucleus is not affected. The atom is affected. That means the electrons may be lost. Rate of reaction may increase. When you use catalysts, they increase the rate of reaction of chemical reaction or atomic, not the nuclear. So most important thing is when Henry Becquerel studied the rate of disintegration, radioactive disintegration, it was found to be independent of strength of the electric and magnetic field. It was found to be independent of temperature and pressure conditions also, and it was found to be independent of chemical composition. What do I mean by that? Suppose this was pure uranium. Now I'm not taking pure uranium. I'm taking UCl5. I'm not taking UCl5 now. I'm taking U2SiF6. एक चीज कॉमन रख रहा हूँ मैं, यूरेनियम है उसमें, वो कंपाउंड का पार्ट यूरेनियम है. प्योर यूरेनियम लिया, enriched uranium, very very expensive. I can't afford it, so I'm using compound of it. I'm using another compound of it. So long as uranium is part of it, my results are the same, right? So Professor Henry Becquerel concluded that radioactivity must be a nuclear phenomenon, because if it was an atomic phenomenon or chemical phenomenon, then this rate would have definitely been changed. Then he suggested properties of alpha, beta and gamma. आपके बुक का कम से कम 6 पेजेस में ये दिया हुआ है, राइट? राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ गामा. उसके बाद का आर्टिकल है डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा एंड बीटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन बीटा एंड गामा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फा एंड गामा. ये सब के सब टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा एंड सो ऑन. उसमें फिर एक और आर्टिकल है कि फ्रॉम दिस प्रॉपर्टीज what can you say about the law of radioactive disintegration, which we have already written over here. Radioactive transformation, sorry, rate of radioactive transformation. Now what are these properties? One by one, ध्यान से सुनो बेटा. Alpha particles are helium nuclei, therefore they are heavy because helium nuclei are heavy, right? They have got energies ranging from about 4 million electron volt to 15-20 million electron volt. Because they are heavy, they go slow. Alpha particle का speed is found to be in the range of 1% to 10% of speed of light. Next, they affect the photographic plates. Next, they produce fluorescence. They produce phosphorescence. Phosphorescence का मतलब होता है glowing in dark. Fluorescence का मतलब होता है having digital print, leaving digital print behind on photographic plates. Zinc sulfide plate अगर मैंने use किया, या तो बेरियम प्लेटिनम साइनाइड प्लेट यूज किया, तो अगर ये पार्टिकल्स तो इनविजिबल, आई कांट सी देम, बट आई कैन सी दिस डॉट्स. दैट मींस समबडी हैड कम, राइट, हु लेफ्ट द डिजिटल प्रिंट ओवर हियर. देन आफ्टर आयोनाइजेशन पावर एंड पेनिट्रेटिंग पावर. जो खुद हैवी होते हैं उनका आयोनाइजेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर सामने कम हो जाता है. मतलब अगर मैं अल्फा बीटा गामा गिनूं तो अल्फा का आयोनाइजेशन पावर हाईएस्ट है and therefore penetrating power lowest है. सामने गामा का आयोनाइजेशन पावर लीस्ट है और penetrating power most है. In fact, the exact relation is ionization power of alpha is around approximately 100 times ionization power of beta in approximately 10,000 times ionization power of gamma. सामने penetrating power में एकदम उल्टा relation. Penetrating power of alpha is about 100
of penetrating power of beta is approximately 1/10,000th of penetrating power of gamma. Right? And final property, when one alpha goes out, this happens. Atomic number reduces by 2, mass number reduces by 4. When one beta goes out, this happens. Atomic number increases by 1, mass number remains the same. And when one gamma goes out, atomic number and mass number both remain unchanged. We are talking about alpha, beta and gamma. That's why I am not including positron वाला reaction. इसको बोलते लॉ ऑफ रेडिएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट? जैसे बेटा आपको अल्फा का प्रॉपर्टीज याद हो गया ना, बीटा का प्रॉपर्टीज आर मोर और लेस सेम, राइट? दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, दे प्रोड्यूस सिंटिलेशन. सिंटिलेशन का मतलब होता है ये डॉट. Scintillation means that digital print which you are leaving behind you, right? तो जो जब आप डिस्टिंग्विश का पार्ट लिखते हो ना, डिस्टिंग्विश, उसमें सेम वाला प्रॉपर्टीज नहीं लिखने का. ऑल ऑफ देम अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स. डिस्टिंग्विश में ये नहीं लिखने का. ऑल ऑफ देम प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये नहीं लिखने का. ऑल ऑफ देम प्रोड्यूस फॉस्फोरेसेंस, ये नहीं लिखने का. अल्फा का स्पीड 1% to 10% स्पीड ऑफ लाइट. बीटा का स्पीड 10% to 99%. गामा स्पीड ऑफ लाइट. Alpha positively charged, beta negatively charged, uncharged because they are photons, affected by electric and magnetic fields. Alpha particles will go towards negative plate, beta particles will go towards positive plate, gamma will go undeviated. ये तीन अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गया. चौथा वाला ये लिख लो बेटा, एक चार्ज और मास वाला लिखो, एक स्पीड वाला लिखो, राइट? एक इन टुवर्ड्स विच प्लेट दे आर डिफ्लेक्टेड वो लिखो, और एक ये लिखो कि व्हेन दे पास थ्रू. हाँ, आयोनाइजेशन पावर, पेनिट्रेटिंग पावर भी आप लिख सकते हो. तो आपकी बुक में बेटा लाइन से 7 आर्टिकल से 6 पेज का, राइट? वो आप सिर्फ डिस्टिंग्विश पढ़ोगे तो भी हो जाएगा. डिस्टिंग्विश में यू आर सपोज टू राइट डिफरेंट पॉइंट्स, डोंट राइट द सेम पॉइंट्स. प्लीज रिमेंबर दैट. दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेस, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेस, तो फिर वो डिस्टिंग्विश किधर हुआ? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो ये 7 आर्टिकल्स मैं साथ में कवर कर रहा हूँ. राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा, राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ गामा, distinguish between alpha beta, distinguish between beta gamma, distinguish between alpha gamma, and law of radiative transformations. Please let me know, do you need to go through the book? Sure. पूरा रट्टा मारा आर्टिकल में, और वो बहुत अच्छे से दिया, आपके थियरी नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हो, राइट? बोर्ड एग्जाम के टाइम पे खाली डिस्टिंग्विश वाला पार्ट पढ़ के जाओगे ना, तो पता था 6 पेज का आपका काम 1.5 पेज में हो गया. Is it clear? Now I am starting with something very very important, and as I asked you, is it done in differential equation? You said yes. बराबर? लेकिन बेटा बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन. मैं जो जो स्टेप्स लिखता हूँ आप लोग मुझे सिर्फ बोलो आपको पता है कि नहीं. इट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, या तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डीके. प्रोफेसर हेनरी बेक्वेरेल फाउंड दैट दिस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is directly proportional to the number of radioactive atoms present at that instant. इसका मतलब ये होता है कि suppose I start with radon today. Half life of radon is 4 days. And if I am having 1000 atoms, after 4 days I will give this sample to him. तो इसके लिए starting amount 500 atoms होगा, क्योंकि मैंने जब शुरू किया तो मेरे पास 1000 atoms थे, लेकिन इसने जब शुरू किया इसके पास 500 atoms है. After 4 more days he gives sample to him, तो उसके लिए 250 atoms है. मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप जब एक्सपेरिमेंट शुरू करते हो और वो टाइम पे जितने एटम्स हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू दैट. अभी ऐसा भी जरूरी नहीं है ना कि मैं 4 दिन के लिए रुकूंगा. मैंने अभी 1000 एटम से शुरू किया, मैंने 3 घंटे के बाद ये सैंपल इसको दे दिया, तो 500 भी नहीं होगा, 1000 भी नहीं होगा, 1000 और 500 के बीच में होगा, बट विल बी मोर क्लोजर टू 1000, बिकॉज 4 दिन तक रुकूंगा तब जाके वो 500 होगा. नाउ देयर आर मेनी एलिमेंट्स वेयर इवन इफ आई वांट टू वेट आई कांट वेट. मैं चेक नहीं कर सकता हूँ कि ये रियली में हाफ हुआ कि, उसके लिए फिर आई नीड टू गो फॉर कार्बन डेटिंग. एग्जाम्पल, इफ आई टेक रेडियम, हाफ लाइफ इज 1620 years. नाउ आई जेन्युइनली वांट टू चेक कि ये हाफ हो रहा है कि नहीं, तो मेरे पास लाइफ है क्या उतना 1620 years का? पॉसिबल ही नहीं है. आर यू गेटिंग दिस? सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन चेक वेदर इट इज रियली रिड्यूसिंग टू हाफ. चलो बेटा, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंस. इसका मतलब एट टाइम t, छोटा t. छोटा t मतलब जब आप रीडिंग लेते हो. यस और नो? सो dn by dt is some constant of proportionality times n. That constant of proportionality is taken as lambda. What is the meaning of lambda? It is called decay constant या तो disintegration constant.
ये लैम्डा के बारे में मैं एकदम एंड में बात करूंगा, राइट? dn by dt is minus lambda n, so this gives me dn upon n is equal to minus lambda dt. पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑफ कोर्स टाइम सेव कर सकता हूं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट गोज आउट, इंटीग्रेटिंग, यस और नो? dn upon n, the integration is log of n to the base e, this is minus lambda t plus c. ये सब आप लोग कर चुके हो, am I right? Then when you put time as 0, when you put time as 0, c का आंसर आएगा log of n0 to the base e. What is the meaning of n0? The initial number, the initial number. And when you substitute, let me call this as equation 2 and let me call this as equation 3. So when you substitute equation 3 in equation 2, when you substitute equation 3 in equation 2, will you get log of n, which was this, is equal to minus lambda t, which was this again, plus log of n0, right, to the base e, to the base e, and therefore log of n upon n0 to the base e is minus lambda t. Logarithmic to exponential function, I get the final hero of the story. And what is that final hero of the story? N is equal to n0, n upon n0 is equal to e raised to minus lambda t, or n is equal to n0 e raised to minus lambda t. So how do we put this in words? Radioactive atoms disintegrate exponentially with time. Rate of radioactive atoms, a number of radioactive atoms disintegrate exponentially with time. So when I want to understand this graphically, will the graph be like this? Will the graph be like this? This is number of radioactive atoms present, and this is with respect to t. So when I start at time equal to 0, when I take my reading at first half-life, when I take my reading at second half-life, when I take my reading at third half-life, when I take my reading at fourth half-life, suppose I started with n0. After first half-life, my answer will be half. After second half-life, my answer will be half ka half. After third half-life, my answer will be half ka half ka half, and half ka half ka half ka half. That means when I join this, ये क्या हो गया बेटा? n0 by 2. ये क्या हो गया? n0 by 4. ये क्या हो गया? n0 by 8. ये क्या हो गया? n0 by 16. Right? So when I join these dots, right, will I get exponentially decreasing graph? And here I get a very beautiful shortcut. Very beautiful shortcut. If small t, which is the time chosen by you, is n times half-lives, then the number of radioactive atoms present behind are half raised to n times n0. Let me prove it. What do I mean by this? अगर बेटा मैं n की जगह पे 1 रखता, मतलब मैंने मेरा रीडिंग इधर लिया, am I left with half raised to 1? अगर मैं मेरा रीडिंग इधर लेता, is it half raised to 2? अगर मैं मेरा रीडिंग 4t पे लेता, so is it half raised to 4? मतलब 1/16 of atoms are left behind. So this is the most beautiful shortcut. If time chosen by you is n half-lives, capital T का मतलब इधर क्या है? Half-life time. What is the meaning of half-life time? It is the time taken by the radioactive sample to reduce to half the original amount. It is sometimes also called T suffix H या तो T suffix 1/2. This is called half-life. यहाँ तक समझा? एकदम श्योर? आगे सुनो. Now something new is coming up, जो आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा. But उसके पहले I told you that we are going to talk about lambda later. What is the meaning of lambda over here? Lambda is called disintegration constant or decay constant, and mind you, it itself is a positive number. It cannot be negative. What do I mean by this? Lambda can be written as minus dn by dt upon n, और या तो फिर it is minus dn upon n upon dt. चेक करो प्लीज, ये इक्वेशन चेक करो. dn upon dt is equal to minus lambda n. Therefore,
लैम्डा इज इक्वल टू माइनस dn by dt अपॉन n, या तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस dn अपॉन n अपॉन dt. सो लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट. सो लैम्डा is minus dn by dt upon n, या तो minus dn by n upon dt. So it is defined as the ratio of rate of disintegration to the number of atoms present. I repeat, it is defined as the ratio of rate of disintegration to the number of radioactive atoms present. या तो फिर it is defined as fractional decrease in number of radioactive atoms per unit time. Fractional decrease in number of radioactive atoms per unit time. अब यहाँ पे बेटा lambda itself is a positive number. Lambda cannot be negative. Negative sign simply implies as time increases, number of atoms must have decreased. Radioactive mass must have decreased. That is the meaning of that. आगे सुनो. When छोटा t was 0, number of radioactive atoms were this, right? When छोटा t becomes बड़ा t, that means time chosen by you is exactly half lifetime. Then can I say number of radioactive atoms present must be half the original. इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये इक्वेशन अभी मैं कैसे लिखूंगा? n is n0 e raised to minus lambda t की जगह पे half n0 is equal to n0, मैंने कुछ नहीं सुना, e raised to minus lambda t. हाँ, किसका बजा? ये तो क्या बज रहा है? अच्छा ठीक है, अलार्म रखा कि 9 से लेकर किसी और का दे दे. फायदा ओके. बिजनेस कॉल्स. तो क्या बिजनेस कॉल्स? बिजनेस कॉल डालिंग आई मीटिंग एट हावड़ा से छोड़ा नहीं है अभी तक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड. n0 गया. So this gives me half is equal to a raised to, ये छोटा t की जगह पे अभी मैं बड़ा t लिखूंगा, because when छोटा t is half life, that time only number of radioactive atoms reduced to half. इसका मतलब 1/2 is e raised to minus lambda t, and therefore 2 is equal to e raised to plus lambda t. यहाँ पे हम लोग logarithmic से exponential पे गए थे, यहाँ पे हम लोग exponential से logarithmic पे जाएंगे. Over here we went from logarithmic to exponential. Over here exponential to logarithmic. So obviously math students के लिए this is very easy. Log of answer to the base is index. बेटा ये intermediate equation है, लेकिन बहुत ज्यादा important है. Intermediate equation है लेकिन बहुत ज्यादा important. अब मैं इसको आगे solve कर रहा हूँ. Therefore can I say 2.303 times log of 2 to the base 10 is equal to lambda t. Because the logbook which we have, it is with respect to base 10. It is not to the base e. Log of 2, it is 0.3010. ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी किया हुआ है, थर्मोडायनामिक्स में. Work done in isothermal reversible process is 2.303 nRT log of V2 by V1 या तो log of P1 by P2. You have done this. Yes or no? This is lambda t, and therefore left hand side का product is 0.693. This is lambda t. This is t half, t half, t half. And therefore we get the relation of t half. Is it 0.693 upon lambda? This is the reason and the proof कि lambda हमेशा पॉजिटिव होता है. lambda हमेशा पॉजिटिव होता है. अगर lambda 0 हो गया, अगर lambda 0 हो गया बेटा, that means radioactivity stops. That means you reached lead. lead आ गया ना, इसका मतलब you have reached the stable isotope. मतलब उसके बाद में रेडियोएक्टिविटी होगा ही नहीं. नंबर ऑफ एटम जीरो नहीं हो रहा है. लैम्बडा जीरो हो गया मतलब dn by dt जीरो हो गया. तो आप लोग क्या बोल रहे हो? रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज जीरो. दैट मींस डिसइंटीग्रेशन स्टॉप्स, डीके स्टॉप्स. इज दैट वेरी क्लियर? दैट मींस लेड पे आके रेडियोएक्टिविटी रुक जाता है. अगर लेड के बाद में आपको रेडियोएक्टिविटी मिलता है मतलब यू आर आर्टिफिशियली डूइंग इट. यू आर आर्टिफिशियली डूइंग इट. ये समझा? नाउ देयर इज वन न्यू कांसेप्ट व्हिच प्रोबेबली यू डोंट नो, राइट? ये आप लोगों ने शायद मैथ्स में सुना था, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में सुना था. नाउ दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मीन लाइफ. मीन लाइफ डिनोटेड एज TM. मीन लाइफ का मतलब होता है एवरेज ऑफ ऑल हाफ लाइफ्स. मीन लाइफ का मतलब होता है
एवरेज ऑफ ऑल हाफ लाइफ। मैंने प्लूटोनियम से शुरू किया, प्लूटोनियम 241, फिर मुझे उसका आइसोटॉप मिला 240, फिर मुझे आइसोटॉप मिला 239, फिर यूरेनियम शुरू हो गया 238, आइसोटॉप मिला 236, आइसोटॉप मिला 235, राइट। व्हेन आई टेक मल्टीपल ट्रांजिशंस लाइक दिस एंड व्हेन आई लेट इट एंड स्टॉप एट लेट, ये सब का जो मुझे ट्रांजिशन मिला, लैम्डा मिला था, वो सब का एवरेज, दैट इज कॉल्ड मीन लाइफ। Half life time is the time in which the radioactive element reduces to half, whereas mean life is the average of all half lives. यहाँ पे मैंने t को बड़ा T लिया था, यहाँ पे मैंने t को बड़ा T लिया था, right? और मुझे ये रिलेशन मिला था। What will be my conclusion? If I take छोटा ts बड़ा T, 50% of atoms बचा, therefore 50% of atoms गया। अब मुझे ये देखना है कि ये टाइम मैं हाफ लाइफ नहीं लेके मीन लाइफ लूंगा तो क्या होगा, राइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ? हाफ लाइफ इज द टाइम इन विच द रेडियोएक्टिव सैंपल रिड्यूसेस टू हाफ द ओरिजिनल अमाउंट। मीन लाइफ इज व्हाट? एवरेज ऑफ ऑल हाफ लाइफ। अभी इसमें कितना एटम्स जाएगा और कितना बचेगा वो मैंने ढूंढा नहीं अभी तक, अभी ढूंढने वाला हूं। डेफिनेशन वाइज मीन लाइफ इज डिफाइंड एज, definition wise mean life is defined as 1 by lambda. It is reciprocal of disintegration constant. It is reciprocal of decay constant या तो disintegration constant. So now I want to establish a relation between half life and mean life. Now I want to establish a relation between half life and mean life. Apply common sense beta. What is T half upon T mean? Is it 0.693? Yes or no? And what is T mean upon T half therefore? What is T mean upon T half? Is it 1 upon 0.693? That means it is 1.44. It is 1.44. Apply common sense. इसको मैं round off करके बेटा 0.7 लूँ, तो ये 10 upon 7 हो गया, right? That is 14 7s are 98. तो ये मेरा आंसर। You have to be careful. They will ask you relation like T half is how many times T mean? 0.693. And T mean is how many times T half? That means it is 1.44. समझा अच्छे से? 1.44 है वो, 41 नहीं। Now very important, very important. When I take time as T mean, not T half, then what will happen? तो फिर कितना एटम्स बचेगा? It is. राइट, तो कितना एटम्स बचेगा? मैं वापस इधर से शुरू करता हूं। कैन आई से n इज इक्वल टू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्बडा t मीन। यहां पे मैंने t हाफ लिया, था, यस और नो? अभी मैं t मीन ले रहा हूं, सो दैट विल गिव मी दिस इज n0 e raised to minus lambda. T mean is 1 by lambda. Lambda gone. That gives me n is equal to n0 times e raised to minus 1. E raised to minus 1 मतलब 1 upon e raised to plus 1 times n0. Mathematical value of e is 2.73. That means n is 1 upon 2.73 times n0. जब आप 1 upon 2.73 करोगे, राइट, तो आपका आंसर आएगा 37%। एक रफ कैलकुलेशन देता हूं। मान लो बेटा ये 1 upon 2 होता तो हाफ होता, 1 upon 3 होता तो 33.33 होता, 0.3333। अगर ये 1 upon 2 होता तो 50%, 1 upon 3 होता तो 33.3%। ये 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, बीच में नंबर है, तो मेरा आंसर 33% से ज्यादा। This answer is approximately 37%. You know what does this mean? If time chosen by you is not half life but is mean life, इसका मतलब ये हुआ कि 30%, 37% remains. n का मतलब होता है कितना एटम्स बचा, उतना बचा, कितना बचा? 37%। इसका मतलब कहना है से 63% must have
decayed? सोचो, yes or no? 37% remains, 63% decays. ये एक्चुअल नंबर है 63.6 और ये नंबर है 36.4, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ लिखते हैं और इसका एक मस्त फिजिकल सिग्निफिकेंस है बेटा. दिस नंबर इज 2/पाई टाइम्स. ये 2/पाई मल्टीपल टाइम्स आ चुका है आपके सिलेबस में. याद करवाता हूँ, जैसे 1/√2 इंपॉर्टेंट है ना, वैसे 2/पाई इंपॉर्टेंट. मैंने एक बार मैग्नेट लिया, डाइपोल मोमेंट इज m, वो सेमी सर्कल में बेंड किया, डाइपोल मोमेंट इज 2/पाई टाइम्स m. ये आ गया. मैंने ऑसिलेशन लिया, ऑसिलेशन, then what is the distance covered in one oscillation? Displacement नहीं, distance. Distance, right? Speed is equal to distance upon time. Average speed पूछते हो लोग, average speed. तो बेटा अगर एक oscillation खत्म हुआ then time is t. Distance covered is 4a. A. This is 4a upon 2 pi by omega. Is it 2 pi a omega? Oh lovely. This is average speed. And this is 2/पाई times maximum speed. फिर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन किया, अर्थ बॉल है, एक प्लेन डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे जाता है, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन कितना है? इट वाज 2/पाई टाइम्स v स्क्वायर अपॉन r. यस और ऐसा सेम आप लोगों ने EMI में किया हुआ है, पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट. तो दैट आल्सो इज हाफ साइकिल, कैपेस हाफ साइकिल वाला पार्ट. यस, are you getting? You are going from 0 to pi. Time wise you are going from 0 to t/2, not t. Capital T में एवरेज पावर इज 0. लॉजिक समझा बेटा? तो जैसे 1/√2 इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, वैसे 2/पाई इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. मैग्नेटिज्म में आया, सर्कुलर मोशन में आया, ऑसिलेशन में आया, रेडियो एक्टिविटी में आया और EMI में आया. कोई ना कोई शायद सर्कुलर मोशन के एकदम एंड में, किधर तो लास्ट में मैंने वो सिनॉप्सिस के पॉइंट्स में दिया हुआ है कि why the factor of 2/पाई is important. या तो उधर दिया होगा या तो ऑसिलेशन है, दो में से एक जगह पे दिया होगा. समझा बेटा? रेडियो एक्टिविटी करेक्ट. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द डे, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज becquerel because it was discovered by Mr. Becquerel. Okay, one becquerel was counted as 1 disintegration per second. This is the unit of radioactivity. But then this becquerel was found to be huge number because it was coming in several millions. Then Rutherford diluted it. He said that 10⁶ becquerels. Let us count it as 1 Rutherford. इसका मतलब now the number is reduced. If suppose my answer is coming as 10 million becquerel, I can say okay, my answer is 10 Rutherford. 10 into 10⁶. Yes or no? Then Madame Curie and Pierre Curie, they performed n number of experiments on radioactivity. In fact, that was the couple who was very very honest to science. They did not take copyrights of their research, because if you take copyrights commercially you can earn like anything. So they said कि radioactivity was already taking place in nature. We were the people who could find it कि हाँ radioactivity जैसा कुछ होता है. So ultimately it was already there in nature. So every big human being should be benefited by it. So we don't want any copyrights. Are you getting this? Otherwise, suppose if you take copyrights, once you take copyrights of this and somebody else is doing research in the world somewhere, that person has to take your consent and will have to give you royalty also. If suppose you are earning 10 crore rupees, okay, we decide on a piece of paper agreement that you will give 20% royalty. So even if I am retired, I will get royalty continuously. अभी कोई म्यूजिशियन कोई बहुत अच्छा गाना बना के गया 50 साल पहले, मान लो किशोर कुमार ने बहुत अच्छा गाना गाया, अभी उसने अपने सॉन्ग के कॉपीराइट्स ले लिए, तो उनके बेटे अमित कुमार को, किशोर कुमार तो नहीं रहे लेकिन उनको उनके बेनिफिट्स मिलेंगे, कॉमर्शियल बेनिफिट्स. अभी अमित कुमार नहीं रहे, सपोज उन्होंने वो साइन किया है 50 ईयर्स के लिए कि आने वाले 50 ईयर्स तक रॉयल्टी मिलेगी, तो उनके ग्रैंडसन को, ग्रैंड डॉटर को भी ये रॉयल्टी मिलेगी, राइट. सो मैडम क्यूरी एंड पियर क्यूरी, they devoted this complete research to humanity. We don't want any copyrights, and ultimately they died because of cancer only, because they were continuously doing experiment. Then one Curie is taken as 3.7 into 10⁻10 disintegration per second, because ये कितना भी जो ले रहे थे ना उसमें बेटा ये फैक्टर हमेशा आ रहा था. तो in order to make it simple, they said that it is 3.7 into 10⁻10 disintegration per second. 5-6 साल पहले बेटा CET में ये क्वेश्चन आया था
1 curie is how many Rutherford? Can I say 37,000 Rutherford? 3.7 into 10 is to 10 can be written as 3.7 into 10 is to 4 into 10 is to 6. 10 is to 6 is 1 Rutherford. Is that clear? So this is the unit of radioactivity. These are the units of radioactivity. एकदम अच्छे से समझा बेटा. घर पे जाके आप थियरी नोट्स एज अ स्टोरी बुक पढ़ना. ट्रस्ट मी, वेरी इंटरेस्टिंग. एज अ स्टोरी बुक पढ़ना. Right? This was the story of radioactivity. This is new topic for you, which you did not hear in the past. So this is on the second last page of your theory notes, and this is on the last page of your theory notes. Right? अभी बेटा अगर आपको टाइम सेव करना है ना, तो जो MCQs इसके ऊपर से हो सकते हैं, वो सब करके आने का. Assignment number 3 and 4 में we have done common MCQs which were there with bio batch and maths batches. अभी जो अनकॉमन है वो सिर्फ आप लोगों के लिए, PCM स्टूडेंट्स के लिए. आपके पास पूरा का पूरा सोल्यूशन, पूरा का पूरा सोल्यूशन. नेक्स्ट टाइम यू बी रेडी विथ योर डाउट्स कि सर असाइनमेंट 3 में से ये नहीं समझा, असाइनमेंट 4 में से ये नहीं समझा. राइट? तो मे बी नेक्स्ट 1 आवर नेक्स्ट लेक्चर का वी विल बी डन विथ न्यूक्लियर फिजिक्स. राइट? एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ वेव्स. फर्स्ट वी विल गो फॉर Doppler effect. We will finish that. Last part will be Mildy's experiment. We will finish that. Right? If you solve and come, trust me, I need 6 hours. Maximum 6 hours. 1 hour for radioactivity, 1 hour for explaining Doppler effect and Mildy's experiment theory wise, and 3.5 to 4 hours for covering all the MCQs. तो next time एक काम करो बेटा, दोनों बुक्स साथ में रखो. रेडियोएक्टिविटी का भी बुक साथ में रखो, वेव्स का बुक भी साथ में रखो, क्योंकि अभी मेरे जो 2 लेक्चर्स आएंगे, बायो का बैच खत्म हो चुका है. राइट? तो दे विल बी डबल लेक्चर फॉर यू. तो इवन योर ट्रैवलिंग टाइम इज सेम. राइट? एंड मे बी इन 2 बिग लेक्चर्स वी कैन टेक ब्रेक इन बिटवीन. 3 आवर्स का लेक्चर तो हम लोग 1.5 घंटे के बाद ब्रेक ले लेंगे. राइट? बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कमिंग विथ योर डाउट्स नेक्स्ट टाइम. रेडियो एक्टिविटी बेटा सोल्यूशन है आपके पास पूरा. आपको ऐसा नहीं सॉल्व करते बैठना है. देखो कि समझा कि नहीं, देखो समझा कि नहीं, ये नहीं समझा, हाँ वी कैन डिस्कस. अंडरस्टूड द लेक्चर ऑफ द डे. बाय बाय, सी यू. मैं देखा इसका फोटो